Hey everyone, so I like memes and do you like memes? I do love memes and it's very therapeutic, कभी भी बैठे हुए एकदम chill और कुछ भी दिमाग में चल रहा है, ज़्यादा न्यूज़ देख लिया कुछ भी देख लिया कुछ भी एक अच्छा सा मीम बनाया है, it feels very therapeutic, बहुत ज़्यादा एक relief feel होती है. So what I'm gonna do in this video is to do a very short review, but a complete review, as short as it can be, about one of my favorite Android apps that I use to make memes. It is called the Free Meme Generator by Zumba Android, and I really like it. उसमें बहुत सारे free features हैं, and it does all the job basically. All whatever that you need is there. Check out the link below in the description of the app if you're using Android. बहुत easily आप उसको download कर सकते हैं, and then you can use it. It has a very intuitive GUI. So let's have a look कि उसके features किस type के हैं and how exactly can you start making memes and become a meme master. ओके सो मैं इसमें मीम जनरेटर ऐप यूज़ कर रहा हूँ और इसके थोड़े जो फीचर्स हैं मैं बता रहा हूँ. तो इसमें तो ऑलरेडी बहुत सारी बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं. यू कैन सी दिस. इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर सम टेम्पलेट यू कैन जस्ट गो टू ऑल एंड देन जस्ट स्पाइडरमैन. सो all these templates they keep coming. Okay, so let's say you want to use the first template. Okay, so अपन ने first template पे टैप किया. So अब यहाँ पे ऑलरेडी ये बनी बनाई टेम्पलेट है. ओके, तो सबसे पहला तो इसमें क्या है कि दो टाइप के मोड्स होते हैं इसमें. एक होता है क्लासिक मोड और एक होता है मॉडर्न लेआउट. सो क्लासिक लेआउट में कंप्लीट स्क्रीन जो है वो कवर्ड रहेगी. यानी कि अभी जैसे कि ये वाली जो ये क्लासिक मोड वाला मीम है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कहीं पे भी बैंड नहीं है. सो इफ़ यू सी यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर में इस स्टिकर बटन के ऊपर लिखा हुआ है स्विच टू मॉडर्न लेआउट. इफ़ यू टैप दिस सो ये पूछेगा अपन को कि यस मॉडर्न लेआउट में स्विच करना है. सो यस. सो अगेन वंस यू डू दिस ये मॉडर्न लेआउट आ जाता है कि you can add something here and then just edit it and stuff. So let's switch back to the classic layout by again tapping the button on the right. So yes, I want to switch. So ये बनी बनाई टेम्पलेट. ओके, सो अब इसमें जो है ना ये वाला जो मीम है वो जनरली ऐसे यूज़ किया जाता है ना. यहाँ पे एक टेक्स्ट रहेगा, इसको मैंने टैप किया इस टेक्स्ट को तो यहाँ पे आ गया. तो अब इसमें जैसे कि इस्लामोफोब्स और यहाँ पे गंगा जमुना मुस्लिम्स. सो मैंने टैप कर दिया तो ये बन गया मीम. अब लेट्स से इफ़ यू वांट टू ऐड सम मोर टेक्स्ट, लेट्स से यू वांट टू ऐड योर पेज का वाटरमार्क वगैरह, तो वो उसमें ये जो है ये सिर्फ ऐड टेक्स्ट करने की आपको ज़रूरत है. एंड यू टैप ऑन द ऐड टेक्स्ट एंड देन यू कैन जस्ट राइट एनीथिंग, लेट्स से व्हाटएवर इज़ योर जो भी आपका पेज का नाम है. लेट्स से XYZ पेज. ओके, अब ये जो टेक्स्ट है आई कैन मूव इट. सो मैंने इसको थंब से अपने सेलेक्ट किया हुआ है और मैं इसको ऐसे से मूव कर रहा हूँ. सो आई कैन जस्ट पुट इट एनीवेयर and you will notice one thing that as soon as you select a text you will find some options that come to the top right corner. जैसे एक A बना हुआ है, एक bucket बनाया हुआ है और एक lock बना हुआ है. So ये जो है ये specifically text वाले features हैं. So I want to do that. First what you need to do is to tap the text and then you need to tap the A that is here. Okay, so you tap it. अब इसमें पूरी text settings आ जा रही हैं. You can make it up completely upper case. You can make it completely lower case. To your left you have that option. Then you can choose from a set of different fonts. Then you can adjust the size here. हर text का जो letter है उसके along एक outline बनी हुई है. So you can edit that. आउटलाइन का कलर अलग हो सकता है और जो उसके अंदर का फिल जो है वो अलग हो सकता है. उसके बाद जो टेक्स्ट में है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस भी
वो करी जा सकती हैं, ताकि जब आप टेक्स्ट को आप एडजस्ट वगैरह करो तो वो ऑटोमेटिकली स्केल कर ले उसके हिसाब से कितनी आप उसको जगह दे रहे हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो इसमें सेट करी जा सकती हैं। उसके बाद टेक्स्ट विथ का एज अ परसेंटेज यू कैन स्पेसिफाई व्हाटएवर, एंड देन यू कैन सेव ऑल ऑफ दीज एज अ प्रीसेट, यानी कि आपका डिफ़ॉल्ट वाला वो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफिकेशंस हैं, यू कैन कीप ऑल ऑफ देम। तो ये तो टेक्स्ट सेटिंग्स हैं, तो इसमें तो बेसिकली सब कुछ किया जा सकता है। प्रीसेट्स जो आप यहाँ पे सेट करोगे तो वो जो है वो यहाँ पे सेव होके आती हैं। कुछ ऑलरेडी यहाँ पे बनी बनाई प्रीसेट्स हैं, जैसे कि रिकमेंडेड डिफ़ॉल्ट वाली है, स्टैंडर्ड मीम वाली है, उसके बाद मॉडर्न मीम वाली है। सो लेट्स यूज़ दिस लास्ट वन, ये जो येलो सबटाइटल्स वाली है। सो आई विल टैप ऑन इट एंड देन आई विल टैप ऑन ओके। सो नाउ यू कैन सी दैट ये XYZ जो पेज है ये उस वाली प्रीसेट में जो है ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। सो अपन ने यहाँ पे प्रीसेट जो चेंज किया, इफ़ यू वांट टू मेक एनी अदर चेंज देन यू कैन चेंज दैट प्रीसेट फ्रॉम हियर, सो इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम। लेट्स से यू वांट टू चेंज द color of the text. So again, top right corner में जो second button है वो bucket वाला, you tap on that, then this gives you all different kinds of colors, so you can just select, it's pretty straightforward. उसके बाद इसको lock भी किया जा सकता है कि let's say यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसमें you want to move it but you want to move it in a very particular fashion. So let's say I only want to move it in a horizontal way. Vertical वाला जो है वो locked रहेगा. So I will choose the horizontal one. If I want to move it vertically and I want to lock any kind of a horizontal movement, I will choose the last one, the vertical one. Okay. स्नैप टेक्स्ट टू सेंटर इज़ बेसिकली कि जब आप टेक्स्ट को मूव करो तो वो सेंटर पे आके एकदम से रुक जाएगा, यानी कि या दिस इज सेंटर। सो यू कैन डू ऑल ऑफ दिस। लेट्स चूज दिस वर्टिकल वन। सो नाउ आई वर्टिकल वाला जो है इसमें लॉक्ड है, मैं इसको ऊपर नीचे मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये मूव नहीं हो रहा है। सो इस टाइप का ये जो है वो लॉक भी किया सकता है। आई डोंट वांट एनी लॉक राइट नाउ, सो आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट। दैट्स इफ यू वांट टू रिड्यूस द साइज, राइट। इसमें मान लो कुछ भी ऐसा है। सो अभी जो है इसमें बहुत सारी जगह है हमारे पास, लेफ्ट से लेकर राइट तक। मैं कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट डाल रहा हूँ। सो इफ़ यू रिमेंबर हम लोग ने इसमें पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस 3 किया था। ओके, so I'm going to reduce the size of the font and you can see that कि automatically scale हो रहा है अपने आप, और scale होते होते ये इतना छोटा होता जा रहा है। तो इतना छोटा हो गया ये ऑटोमेटिकली। मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये वापस जो अपन लोगों ने साइज़ दिया हुआ था ये वो साइज़ ले लेगा। then you can put it in any other corner. Okay, so this is basically all that you have to do. इसमें almost सब कुछ है। Let's say if you want to add some stickers, so you click on stickers, and then if you want to add XYZ different number of stickers, then you can add them pretty easily. अच्छा, इसमें कुछ stickers free हैं और जिनमें lock लगा हुआ है, they are for the paid version, so वो भी कोई बड़ी it's not a big deal. Let's say if you want to add the where, उल्टी वाला कहाँ है वो, yes, ये वाला। So you just add it and then you can put it here. And if you want to, again, so just to tell you that कि मैं इसको resize कहाँ से कर रहा हूँ, ये जो bottom right corner में उसी emoticon के जो ये arrows बने हुए हैं बॉटम राइट कॉर्नर पे, उनको मैं आगे पीछे कर रहा हूँ वहाँ से पकड़ के, तो ये इसमें बड़ा छोटा हो रहा है। इफ़ आई वांट टू रोटेट इट, टॉप राइट कॉर्नर में वो जो सर्कुलर शेप में एरोज बने हुए हैं उनको पकड़ के मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये घूम रहा है। ओके, उसके बाद आगे इफ़ आई वांट टू रिमूव इट, अगेन वेरी इजी, टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाला जो बटन है उसको बस ऐसे टैप कर दो एंड इट्स गॉन। दिस वाज मोस्टली अबाउट the meme features. So let's say if you want to make आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मीम जो है वो कैसे यूज़ होता है, ओके, and you don't understand how it works. So as simple as, so what you have is a button at your bottom which is example, add text के just नीचे, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। So if I tap on example, ये मुझे एक एग्जाम्पल देगा। ओके, सो
जैसे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी जो है. सो ये ओके, सो मुझे समझ आ रहा है कि ओके, तो मतलब ये दिखाया जा रहा है कि वो जो छोटा वाला जो स्पाइडरमैन है वो कॉपी कर रहा है. दैट्स द पर्पस ऑफ दिस मीम. इफ़ आई टैप ऑन द एग्जांपल अगेन, देन यू कैन सी दैट ये फिर से आ गया थानोस कार और लिम्प कार. जो लोग नहीं देखते उनको समझ नहीं आएगा. खैर, आई टैप्ड ऑन द एग्जांपल अगेन एंड देन so it's basically telling me how this works. Okay, so this is a good way to acquaint yourself with how the meme works और उसके पीछे क्या logic है, so that you can understand it. So what I'm gonna do is show you something else as well. So अब हम लोग वापस आ चुके हैं और we are seeing all the memes. जो latest updates आती रहेंगी उसमें new memes आते रहेंगे, तो वो हम लोग new वाले टैब में देख रहे हैं यहाँ पे. तो न्यू वाले टैब्स में जैसे कि अभी ये बग्स बनी वाला जो है वो न्यू आया हुआ है, सो लेट्स सिलेक्ट दिस वन, बग्स बनी. एंड अगेन सिंस यू आर यूजिंग द ऐड, इसमें ऐड भी आएंगे एंड आई एम नॉट रिमूविंग दैट सो दैट यू कैन सी. So I don't know how to use this meme, so I'm gonna tap example जो नीचे वाले में ऐड टेक्स्ट के नीचे है, so I just tap on it. So okay, mom is during an argument, my house, mom during cleaning our house. So so let me tap on the example again. So CEOs during economic boom, my profit, and CEOs during recession, our losses. Makes sense. That's how crony capitalism works. So this is a very good way to acquaint yourself कि किस टाइप से इनको यूज़ करना है, किस टाइप से इनको यूज़ किया जा सकता है. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर क्या है कि वो ड्रेक वाला कहाँ है. Let me search that. Let's say if you want to put somebody's face in it, what we can do is put a face here instead of Drake का जो face है यहाँ पे, या फिर किसी भी उसमें if you want to add something, कोई और आप लोग को बनाना है तो उसके लिए जो हमारे पास जो feature है, it is the sticker feature, and you can see that at the bottom right we have the sticker feature. So if you can insert stickers from that. हमारे पास राहुल गांधी की मेरे पास एक फ़ोटो है एंड मैं राहुल गांधी का फेस जो है इस वाले उसमें निकाल के डालूंगा. सो what we need to do is सबसे पहले तो हम लोग को स्टिकर वाले उसमें जाना है. ओके, सो अगेन स्टिकर इज़ एट योर बॉटम राइट, सो यू टैप ऑन द बटन स्टिकर. सो you basically create a sticker and then it will ask you where do you want to insert it from. Do you want to take a picture or do you want to take it from your gallery, या फिर कोई meme है जो आपको as a sticker insert करना है. तो let's select gallery and other sources. उसमें जाके मैं राहुल गांधी की इमेज को मैं select कर लिया. अब इसमें ये बोल रहा है कि पहले तो crop as much as you can. Okay, so this is what I'm gonna do. I'm gonna crop as much as I can. और उसके बाद लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. अब यहाँ पे वी हैव दिस ब्रश. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू पुट योर थंब ऑन द सॉलिड ग्रीन और वो इरेजर की तरह इसको मिटा देगा. ऑन योर बॉटम यू कैन सी दिस इरेजर राइट, जो अभी हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है, तो वो मिटाना जो है वो स्टार्ट कर देगा. सो आई एम टैपिंग XYZ प्लेसेस, तो वो जो उठ के जो है वो इधर उधर जा रहा है. अब मैं मिटाना स्टार्ट करूँगा. सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना टैप एंड होल्ड द सॉलिड ग्रीन एंड देन मूव इट. सो यू कैन सी दैट वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको इरेज करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो है वो आने लग गया है. सो ये जो चेकर्ड जो स्क्रीन है दैट इज़ बेसिकली द ट्रांसपेरेंट पार्ट. सो ये मैं इसको ऐसे मिटा रहा हूँ. ओके, परफेक्ट. यू कैन डू दिस मच मोर फास्टर हियर. इस वाले ऐप में ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर है. यू कैन सी दैट देयर इज़ अ मैजिक वॉन्ड. अच्छा, ऑफ कोर्स इसमें जूम वाला भी एक ऑप्शन है. यू कैन जूम करके एकदम बारीकी से भी मिटा सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड. सो लेट्स सिलेक्ट दिस मैजिक वॉन्ड थिंग जो बॉटम में थर्ड वाला जो वो है उसको. अब उसको सिलेक्ट करने के बाद यू कैन एडजस्ट द सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी का मतलब आपको अभी समझ आएगा कि हाउ स्ट्रांगली इट्स गोइंग टू इरेज द बैकग्राउंड.
तो लेट्स कीप इट वेयर इट वाज, अपन उसको बीच में ही रखते सेंसिटिविटी को। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जिस पार्ट को मुझे मिटाना है मैं उसको टैप करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये दीवार वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रेज जो भी है ये, तो इसको मिटाना है। सो मैजिक वॉन्ड पे ये जाकर फिर मैं इसको टैप करूँगा एंड अगेन बूम, उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है ये अलग वाला वो है और उसने इसको मिटा दिया। सो मैं ऐसे ही ये ब्लू वाला जो इसका शोल्डर वाला पार्ट है इसको भी मिटाना चाहता हूँ। सो आई एम गोना टैप एंड इट गोज बूम, देन आई एम गोना डू इट अगेन टू द अदर शोल्डर वाला पार्ट ब्लू वाला एंड आई एम गोना टैप एंड इट गोज बूम। ओके, देन आई एम गोना टैप अगेन एंड इट गोज। ये करने के बाद यू कैन गो बैक टू द इरेजर। अच्छा, इरेजर का साइज़ बड़ा छोटा आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं, ये जो साइज़ है। So then you just remove whatever is remaining is जो part है, and then you just remove। थोड़ी सी cleaning भी करी जा सकती है। I am a bit hurry। राहुल गांधी की घटिया सी हेयर स्टाइल, poor guy। So yeah, no, he's definitely not poor। So ये हम लोग ने इसको, and now we have our राहुल गांधी। सो ये करने के बाद ऑल यू नीड टू डू इज़ टॉप राइट कॉर्नर पे जो चेक वाला जो बटन है, यू टैप दैट एंड बूम, यू हैव योर स्टिकर। सो नाउ यू कैन मूव दिस अराउंड, यू कैन रीस्केल दिस स्टिकर एंड देन यू कैन पुट इट हियर। सो नाउ दिस इज योर ड्रेक गांधी। How does it look? This looks awesome, right? And if you want to, let's say, reuse your sticker again, then again आप अब जब भी आप स्टिकर पे जाओगे, tap on the sticker button and go to my stickers, you will find your previous stickers here। if you want to edit it again, उसको check mark करो और जो नीचे जो बटन जो बना हुआ है edit वाला, just tap on that and then you find it, you know। so यहाँ पे this selected, okay, so this is awesome, right? so yeah, so this is very interesting feature जो आप लोग को कस्टम मीम्स बनाने में, सेलिब्रिटीज़ और इंटरेस्टिंग लोगों के आपको जो है वो बहुत ज़्यादा काम में आएगी। ये तो हम लोग ने मीम बनाया। अब इफ़ यू वांट टू सेव दिस राइट एज अ टेम्पलेट, एज एन एडिटेबल, इफ़ यू वांट टू सेव इट एज अ मीम, जस्ट टैप ऑन सेव एंड सिलेक्ट सेव टू डिवाइस, वो आपकी गैलरी में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बट इफ़ यू वांट टू सेव इट एज अ टेम्पलेट, जिसको आप आगे जाके एडिट कर सको, सो देन यू गो टू सेव एंड देन यू सेव एज एडिटेबल टेम्पलेट, ये जो नीचे वाला जो ऑप्शन है, देन यू गिव इट अ नेम। उसके बाद वंस यू डू द सेविंग, लेट अस डू इट। सो आई हैव सेव्ड द टेम्पलेट, आई गो बैक। उसके बाद मीम्स वाला जो विंडो है उसमें यहाँ पे एडिटेबल टेम्पलेट्स आपको लेफ्ट से टॉप से लेकर थर्ड वाला ऑप्शन जो वो है, तो उसमें यू कैन गो टू एडिटेबल टेम्पलेट्स एंड देन यू विल फाइंड इट हियर and then you can edit that template here, okay, so not a problem। so ये एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे इसमें फीचर है। so basically इसमें सब कुछ है, you can do almost each and everything। यहाँ पे बहुत सारे options हैं and इन लोग का एक और भी ऐप है which is about videos and लेकिन वो एक separate ऐप है। so if you go and tap on the video part, it will ask you to, so मैंने already डाउनलोड करके रखा है। if you don't have it downloaded, it will ask you to download that app and then you just create that। so that was it, and this is a very short introduction to making memes, and it's very therapeutic। have a good time, enjoy it।